It has been a hectic day for saffron stalwart Narendra Modi. While he has filed his nomination papers for the Vadodara Lok Sabha constituency, he declared that this was his Karma Bhumi. Narendra Modi wore a saffron jacket and waved to thousands of cheering supporters on his way to the collectorate. He filed his nomination papers for the 6-week-long elections of India. Modi waved to a sea of supporters holding BJP's saffron-coloured flags. It was exactly at 11:28 a.m. that he submitted his papers before the returning officer of Vadodara. Earlier, after arriving at Vadodara, he took part in a roadshow termed the Vijay Vikas Yatra. At least 1,000 cops were deployed along the route to maintain a strict vigil. The city was all saffron as there were slogans shouting, there were saffron Gandhi caps, Modi mask and large cutouts of the lotus symbol all dotting the city's streets. An emotionally charged Narendra Modi, after filing his nomination papers, termed it his Karma Bhumi. वडोदरा मेरी कर्मभूमि रही है। इसी से 200 कदम दूरी पर ही मैं बहुत वर्षों तक रहता था। आज फिर से एक बार एक जनप्रतिनिधि के रूप में मुझे कार्य करने का अवसर मिलेगा। Modi is up against Congress candidate Madhusudan Mistry and Aam Aadmi Party's Sunil Kulkarni. Narendra Modi said he was happy that in a long career he had scaled most of Gujarat. मैंने प्रारंभ किया था सौराष्ट्र की भूमि से, फिर उत्तर गुजरात में गया और अब ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे मध्य गुजरात में आने का मेरी पार्टी ने अवसर दिया है। He thanked the royalty in the state for their support. A special mention was made of the Gaikwads. और मुझे गायकवाड़ स्टेट की उस विरासत का लाभ मिला है। मेरी प्राथमिक शिक्षा गायकवाड़ की बनाई हुई प्राथमिक शाला में हुई थी और आज भी गुड गवर्नेंस के लिए, लोक कल्याण के लिए सयाजीराव गायकवाड़ का नाम स्वर्णिम पुष्पों से लिखा गया है। Modi is hopeful of a resounding victory. मुझे विश्वास है कि बड़ौदा लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाता उमंग और उत्साह के साथ लोकतंत्र के इस पावन पर्व चुनाव को उत्साह और उमंग से मनाएंगे और 30 तारीख को भारी मतदान करके कमल के निशान पर बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को भव्य विजय दिलाएंगे। This report was brought to you by NNIS.